Good morning to all my dear students. Today in the accountancy lecture, here we are starting with the new topic, that is bank reconciliation statement. Okay, now this is the first time you are hearing this word. What is bank reconciliation statement? So before starting with the theory topic, let me tell you that we are maintaining cash book in our business. Okay, so in that cash book, double column cash book, if you know that, then there is a two columns we maintain, cash column also and another one is bank column also. So whatever money are coming into business through cash or through check, what we have done, we simply debit it. Yes or no? अगर कैश बुक टॉपिक आपने ठीक से पढ़ा होगा, so you know that whatever the money comes into business, so we simply what we do, we simply enter that entry in the debit side of cash column. और अगर पैसा बैंक में जाता है, बैंक में ऐड होता है, so what simply we do, we simply debit that transaction in bank column. Okay, now similarly in case of credit, if there is again two column, cash column and bank column, so what we have done, अगर कैश मेरे बिजनेस में से बाहर जाता है, सो सिंपली आई क्रेडिट दैट ट्रांजेक्शन. और अगर मेरे बैंक में से पैसा बाहर जाता है, इफ़ आई एम मेकिंग पेमेंट to someone by check, so what I will do, I will done the credit effect, I will complete my credit effect on the bank column. Okay, so this was our cash book, yes or no, which we have studied. But now let me tell you one thing. कभी कभी क्या होता है, सपोज अगर मैंने पेमेंट किया है किसी को, पेमेंट थ्रू चेक, पेमेंट थ्रू चेक for rupees, say for example 5,000. So what I will do, in my cash book के बैंक कॉलम के स्टेटमेंट में what I will do, मैंने 5,000 का पेमेंट किसी को किया थ्रू चेक, सो मैं क्या कर दूंगी, सिमिलरली ये 5,000 रुपीज़ को आई विल क्रेडिट इट. ओके, व्हाट डज इट मीन, मेरे बैंक में से 5,000 रुपीज़ माइनस हो गया. ओके, बट लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो पर्टिकुलर चेक है, ये तो मैंने सिंपली क्या कर दिया है, सामने वाले को पेमेंट करने के लिए दे दिया है. फॉर एग्जांपल मिस्टर ए को आई हैव पेड 5,000 रुपीज़ का चेक. ओके, मुझे 5,000 रुपीज़ उसको पे करने थे, तो मैंने चेक दे दिया. ओके, बट मिस्टर ए जो है, दैट मिस्टर ए इज़ वेरी मच लेजी इनफ, उसने वो चेक बैंक में डिपॉजिट नहीं किया. ओके, आफ्टर 1 month, here I am writing, after 1 month he deposited that check into bank. Okay, so बैंक में वो मेरे बैंक में से पैसा 5,000 रुपीज़ कब माइनस हो जाएगा, आफ्टर 1 month, yes or no. बट वॉट आई हैव डन, इन माई कैश बुक मैंने वो 5,000 रुपीज़ चेक जैसे ही मिस्टर ए को दिया, मेरे कैश बुक में से 5,000 कब मैंने माइनस किया, ऑन द स्पॉट माइनस किया. बट एक्चुअल में बैंक में से वो 5,000 रुपीज़ कब माइनस हो गए, आफ्टर दिस 1 month. ओके, व्हेन मिस्टर ए डिपॉजिटेड दैट चेक इनटू बैंक, तब वो चेक क्लियर हो गया और 5,000 रुपीज़ मेरे बैंक में से तभी माइनस हो गए. इज़ दैट क्लियर? सो देयर इज़ अ डिफरेंस ऑफ टाइम, डिफरेंस ऑफ दिस 1 month, येस और नो. एंड हमें क्या करना है, इन द बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट वी नीड टू फाइंड आउट दोज डिफरेंसेस. वॉट एवर द एंट्री बिजनेस मन इज मेकिंग इन कैश बुक, नॉट नेसेसरी कि बैंक में से भी उतना ही पैसा ऑन द स्पॉट लेस हुआ है या फिर ऑन द स्पॉट ऐड हुआ है. ओके, बैंक में जो अगर आप आज चेक डाल दोगे फॉर द क्लियरेंस पर्पज़, सपोज मुझे पेमेंट मिला, सपोज मुझे सैलरी मिली. ओके, सो वो सैलरी का स्लेब, सैलरी का जो चेक होगा, वेन एवर आई विल डिपॉजिट दैट चेक इनटू बैंक. ओके, आज का 1 तारीख है. ओके, ऑन द 1st of सपोज ये कौन सा मंथ है, फेब. सपोज इन द 1st month of फेब
if I have deposited check into bank. Okay, so bank will take 2 to 3 days to clear it. Okay, सपोज मेरा चेक है 5,000 रुपीज़ का, मैंने क्या कर दिया, इन माई कैश बुक में देर आर टू अकाउंट्स, कैश अकाउंट एंड अनदर वन इज़ बैंक अकाउंट. सो व्हाट आई विल डू इज़, जैसे ही मैं चेक डिपॉजिट कर दूंगी इन द बैंक, आई विल ऐड दिस 5,000 रुपीज़ इन माई बैंक अकाउंट. येस और नो, कैश बुक के बैंक अकाउंट में आई विल ऐड इट. ओके, बट बैंक विल टेक एटलीस्ट 3 days टू क्लियर इट. सो बैंक में ये 5,000 रुपीज़ कब ऐड हो जाएंगे, आफ्टर 3 days. ओके, सो ये जो 3 days का जो लैप्स है, सो दैट लैप वी नीड टू रिकवर, वी नीड टू रिकंसाइल. इज दैट क्लियर? अगर ऑन द स्पॉट में 5,000 रुपीज़ मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में ऐड करती हूँ, बट नॉट नेसेसरी कि वो बैंक में भी मेरे 5,000 रुपीज़ क्रेडिट हो गए. येस और नो? व्हेन आई विल गेट मैसेज योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड बाय 5,000 आफ्टर 3 days, बट मैंने अभी के अभी मेरे बैंक में, मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में 5,000 रुपीज़ ऐड कर दिए. राइट और रॉन्ग? ओके, सो ये 3 days का जो लैप्स है, 3 days का जो टाइम है, उसकी वजह से जो डिफरेंस आ रहा है मेरे कैश बुक में एंड मेरे पासबुक में, बैंक के लिए कौन सा बुक रहता है, पासबुक रहता है. ओके, व्हाट वी डू इज, इन फॉर द अकाउंटेंसी पर्पज इन द बिजनेस वी मेंटेन कैश बुक. ओके, एंड फॉर द अकाउंटेंसी पर्पज ऑफ क्लाइंट बैंक मेंटेन पासबुक. So not necessary that whenever I will add or I will less my money from cash book, not necessary कि बैंक में भी at the same time same transaction add और less होगा. Is that clear? And इसीलिए एक वक्त लगता है, और after completing 1 month period every businessman reconciles his books. Okay, and that processing is nothing but bank reconciliation statement. Okay, I hope you have understood that why there is a need of bank reconciliation statement. Is that clear? Okay, here I am repeating once again. अगर मैं आज चेक डिपॉजिट करती हूँ बैंक में, so what I will do is I will simply add that money in my cash book. Okay, but after 3 days bank will add that money in your bank account. Okay, चेक क्लियर होने में उतना टाइम तो लगता है. ओके, सो ऑन दिस डे, ऑन द 1st of Feb, suppose my cash book balance in bank column, okay, in bank column my cash book balance is showing 5,000, but on the same date my bank balance on passbook, bank maintains passbook, so passbook में on that day 0 rupees are there. Okay, so there is a difference of this 5,000 rupees in both the figure. Yes or no? So why there is a need? There is a need. What there is a need? There is a need to reconcile my passbook. Okay, there is a need to reconcile my passbook with cash book. Okay, or I can say I need to reconcile my cash book with passbook. Is that clear? Okay, so 1st Feb को मुझे क्या करना चाहिए, एक्चुअली मेरे बैंक अकाउंट में पैसा कब जमा होने वाला है, ऑन 3rd of Feb. येस और नो? सो मुझे 3rd Feb को ही ये 5,000 रुपीज़ मेरे कैश बुक में दिखाने चाहिए. येस और नो? बिकॉज बैंक में वो पैसा कब आने वाला है, 3rd Feb को. सो मुझे भी 3rd Feb को ही मेरे कैश बुक में पैसा डालना चाहिए, बट मैंने वैसे नहीं किया. मैंने क्या कर दिया, 1st Feb को ही जैसे ही मैंने बैंक में चेक डिपॉजिट कर दिया, एट दैट मोमेंट ओनली आई हैव शोन इट इन माई कैश बुक. ओके, सो ये जो, इट इज़ नॉट अ मिस्टेक, वी नीड टू मेक रिकंसाइल ओवर हियर. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टूवर्ड्स सम थेरी मीनिंग. ओके, अगर आपको ये जो मीनिंग मैंने यहाँ पर पढ़ाया, इफ़ यू कम्प्लीटली कम टू नो दैट, इफ़ यू कम्प्लीटली नो दैट मीनिंग, सो यू विल बेटर it will be better to start with theory for you. Okay, see,
सी मीनिंग ऑफ रिकन्सिलिएशन क्या है देखो. अ बिजनेसमैन मेंटेन्स कैश बुक विथ बैंक कॉलम इन हिज लेजर. Yes, of course, we have studied that cash book. Okay, wherein he records all banking transaction. हमने cash book में बैंक transactions भी record किए थे. Yes, of course. The bank column in his cash book represents bank current account. Okay, cash book में जो कुछ भी बैंक का कॉलम रहता है, see this is my cash book. Okay, in this cash book there are two column, cash column, bank column. On debit side and on credit side also there are cash column and bank column. These two columns are there. Is that clear? Okay, so ये जो bank column है, that bank column represents current account. Okay, it represents current account, and whatever money comes into business, that side is receipt side, and whatever the money goes out of business, that side is payment side. Okay, see here in this chart I will show you cash book pro forma and passbook pro forma. Okay, this both the pro forma are totally opposite. See, in our business हमने जो कैश बुक बनाया था, सो कैश बुक के डेबिट साइड में देयर इज़ अ रिसिप्ट, एंड जो कुछ भी पेमेंट कैश थ्रू या चेक थ्रू हम करते थे, सो दैट साइड वॉज पेमेंट साइड. Okay, and in case of passbook which is maintained by your bank, okay, हमारा अकाउंट है. सी वी आर बिजनेसमैन, सो बिजनेसमैन का जो अकाउंट होता है, डेबिट साइड में क्या आता है, पेमेंट आता है, और क्रेडिट साइड में रिसिप्ट आता है. व्हाट डज इट मीन? सपोज मैंने 5000 रुपीज़ का चेक आई हैव रिसीव्ड फ्रॉम समवन, सो आई विल शो इट इन रिसिप्ट साइड ऑफ माई कैश बुक. बट सिमिलरली मेरे बैंक में रिसिप्ट साइड कहाँ पर है? सी ऑन द क्रेडिट. ओके, क्रेडिट में है रिसिप्ट साइड, सो बैंक क्या कर देगी, 5000 रुपीज़ यहाँ पर शो कर देगी. इज दैट क्लियर? दिस रिसिप्ट ऑफ रुपीज़ 5000 आई हैव entered as on 1st Feb, but this receipt of 5000 on the bank's passbook, it is entered on 3rd of Feb. So there is a difference. As on 1st Feb 5000 receipt cash book में पड़ा था, but as on 1st Feb 5000 receipt passbook में पड़ा था क्या? नहीं. And that thing we need to reconcile. Is that clear? Okay, let's move on. The bank column in his cash book, see here, ये मैं पढ़ रही हूँ. The bank column in his cash book represents bank current account. Bank, being the other party, records this transaction in their ledger known as passbook. Bank क्या maintain करती है? Passbook. If you are maintaining your bank account, okay, so your transaction you can see in the passbook. ओके, जो पासबुक कौन मेंटेन करता है? बैंक मेंटेन करता है. आप पासबुक प्रिंट करते हो कि नहीं? ओके, सो पासबुक प्रिंट करने के बाद इट इज़ व्हाट? इट इज़ अ पासबुक विच इज़ मेंटेन्ड बाय बैंक. ओके, और आपके बिजनेस का जो होता है, दैट बिजनेस इज मेंटेनिंग कैश बुक. ओके, so bank, being the other party, records this transaction in the ledger known as passbook. When businessman deposits money or check into bank for the collection, it is recorded in the cash book on debit or receipt side. Okay, I am repeating once again this sentence. See here, whenever businessman deposits money or check into bank, okay, बैंक में अगर मैंने पैसा जमा कर दिया फॉर द कलेक्शन, मतलब मुझे 5000 का चेक मिल रहा है एज अ सैलरी, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल डिपॉजिट दैट चेक इनटू माय बैंक. ओके, सो ये मैंने चेक डिपॉजिट कर दिया, एंड आई विल रिकॉर्ड, बीइंग अ बिजनेसमैन आई एम मेंटेनिंग कैश बुक. सो बीइंग अ बिजनेसमैन, इफ आई एम मेंटेनिंग कैश बुक, आई विल रिकॉर्ड इट ऑन द डेबिट साइड और रिसिप्ट साइड. ओके, सी हियर इन दिस चार्ट यू कैन सी, मुझे 5000 रुपीज़ का चेक मिला. ओके, सो व्हाट आई विल डू इज़ आई विल मेंशन ऑन द डेबिट साइड ऑफ माय कैश बुक. ओके, ये तो हमने पढ़ाई किया है इतना तो. ओके, नाउ नेक्स्ट, बैंक रिकॉर्ड्स दिस ऑन क्रेडिट और द रिसिप्ट साइड ऑफ
पासबुक, और सिमिलरली वही 5000 रुपीज़ जो मुझे मिला है. ओके, सो बैंक विल मेंशन दैट 5000 रुपीज़ ऑन द क्रेडिट साइड. ओके, सो मुझे मैसेज आ जाएगा, योर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड. यस और नो? सो बैंक में पैसा मेरा आया, सो बैंक विल क्रेडिट दैट मनी. और मेरे बिजनेस में मेरा पैसा आया, सो आई विल डेबिट इट. इज दैट क्लियर? ओके, नाउ नेक्स्ट. Bank records these on credit or receipt side of passbook. Similarly, when businessman issues check for making payment, it is recorded on the credit side of the payment of cash book. Okay, see here it is. Here, if I am making payment to someone for ₹1000, 1000 का मैंने पेमेंट कर दिया, सो सिंपली व्हाट आई विल डू इज़ मेरे कैश बुक के क्रेडिट साइड, दैट इज़ पेमेंट साइड में, आई विल रिकॉर्ड दिस 1000 रुपीज़ पेमेंट. बट बैंक क्या करेगी, मेरे बैंक में से पैसा जा रहा है, सो बैंक विल डेबिट माई अमाउंट. ओके, सो बैंक का पेमेंट साइड फॉर ₹1000 कहाँ पर रहेगा, डेबिट साइड रहेगा. इज दैट क्लियर? दैट इज़ वाई आई एम सेइंग दैट कैश बुक receipts payments are completely opposite to the passbook receipt payment. Okay, opposite relation है, it is a vice versa relation. Is that clear? Okay, bank records these transactions on the debit side of the payment side of passbook bank statement. Thus whatever is recorded by businessman in cash book is invariably recorded in the passbook, that is bank statement. Ideally then, cash book bank balance and passbook bank balance should be same. Yes or no? See, here it is. Agar there is a vice versa thing, if I am receiving ₹1000 ka check, so in my cash book I will debit it because debit side is receipt side. And similarly, once that check will get cleared from the bank, so bank will credit my account by ₹1000. so ये दोनों जो अकाउंट्स है, कैश बुक एंड बैंक बुक, बोथ द अकाउंट्स आर ऑफ सिमिलर इन नेचर बट इन अ अपोजिट डायरेक्शन. they are similar in nature and opposite direction, and that is why both the figures of cash book and bank book must be tally. ओके, बट ये टैली कब होगा, करना पड़ेगा आफ्टर रिकनसाइलिंग इट, बिकॉज ये 1000 रुपीज़ आज के आज ही मेरे अकाउंट में मैंने क्या कर दिए, दैट इज़ कैश बुक में दिखा दिए. बट बैंक कब दिखाएगी, वंस द चेक विल गेट क्लियर. सो बैंक विल टेक 2 days, 3 days और 4 days ऑफ टाइम. ओके, सो आज की तारीख में एज ऑन 1st of Feb ये दोनों का जो अकाउंट है, दोनों का अकाउंट इक्वली टैली हो सकता है क्या? नो. सो दैट अकाउंट वी नीड टू मेक टैली आफ्टर द एंड ऑफ मंथ. इज दैट क्लियर? The only difference would be that if cash book has a debit balance, the passbook will have a credit balance and vice versa. Okay, अगर मेरे कैश बुक में, if in my cash book receipt side is heavier, if in my cash book this receipt side is heavier, what does it mean? At the end of the month ज़्यादा पैसा मेरे receipt side में पड़ा है, that is cash book में पड़ा है, so it is debit balance. So the same balance the bank will show as a credit balance. That is the only difference. Otherwise both the cash book and passbook are similar in nature but in opposite direction. Is that clear? Okay, once you will get clear with that thing, then only we can move on towards the next lecture. Okay, till then here we are done for the day. Thank you. You can take just a screenshot of this paragraph. Okay, note it down and try to understand it by yourself also. आप घर पे जाके क्या करोगे, आपका पासबुक भी एक बार चेक करो. पासबुक में अपोजिट डायरेक्शन, कैश बुक जो हमने पढ़ा है उसी के अपोजिट पासबुक बनता है. व्हाट डज इट मीन? कैश बुक में पैसा आया,
सी कैश बुक में पैसा आया, रिसिप्ट साइड हम लिख देते हैं, दैट रिसिप्ट साइड इज नथिंग बट डेबिट साइड, बट इन पासबुक रिसिप्ट साइड इज योर क्रेडिट साइड. इज दैट क्लियर? ओके, सो बाकी बातें अगले लेक्चर में. टिल देन, थैंक यू फॉर द डे.